MEG 14, how going to clear the concept of MEG 14? कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए, and how going to the master of MEG 14. So this paper is one of the most important paper for specifically MEG students. आप बोलते हो contemporary Indian literature in English translation. Yes, contemporary. So when the contemporary comes, we have something in mind कि यार ये contemporary है तो इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए, हम कैसे क्लियर करेंगे, पॉइंट्स कैसे क्लियर करेंगे, चीज़ों कैसे समझेंगे, और कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन अ माइंड, कैसे कंटेम्प्रेरी में सर पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम टॉकिंग दिसंबर एग्जामिनेशन, आप लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी, आई होप सबके सब पूरी तरह तैयार हैं कि दिसंबर एग्जामिनेशन नंबर लेके आने हैं. सर वी नीड टू स्कोर मैक्सिमम इन दिस MEG 14 पेपर. तो येस, आई टेल यू, स्टार्ट विथ पोएट्री सेक्शन. RTC, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सबको आना चाहिए. पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो आपको आना ही चाहिए. आपने कहा क्या है, कैसे है, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या होंगे, सब डिस्कस करना हमारे इम्पॉर्टेंट है. येस, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तो पॉम्स करनी है सबसे पहले. तो पॉम्स में सबसे पहली पॉम जो होनी चाहिए, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, सी दिस दिसंबर एग्जामिनेशन, तो आपको ये पोएट्री बड़े अच्छे से कर लेनी है. मस्ट बी ऑन योर टिप्स, मस्ट बी. आई रिपीट नाउ, कहता है द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट. तो आई होप जो बच्चे लिख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दे बी एबल टू राइट डाउन इजीली, चीजें क्लियर करेंगे. जंप टू द नेक्स्ट वन, सर द लास्ट ड्रीम. द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, द लास्ट ड्रीम, एंड वी हैव जस्ट वन ट्राई. सॉरी, जस्ट वन ट्राई. The stone speaks in the forest, the last dream, just once try. Shri Radha, one of the most important paper में आएगी confirm. Shri Radha. Then a notebook of poems, autobiography. ये तो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. से इनके बाद एक पोइट्री है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के से, ऑर्फिसिस. ऑर्फ्यूज बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. पेपर में आती है ट्री एंड द सीज, द स्टेयर, द मून. यस, द मूवमेंट ऑफ करेज. The moment of courage, and the last not the least. So दो पोइट्री जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके साथ एक एडिक्शन दूंगा मैं. अगर तीन पोइट्री सबसे पहले करूँ ना तो कुछ गलत होगा. तीनों की तीनों पेपर होंगे इस बार. सबसे पहले किचन. ये सबसे पहले किचन. देन आई मेट विद विटपेन yesterday. I met with Whitman yesterday. And the last poetry that you guys need to do is one of my favorite, Mother Serious. Yes, Mother Serious. I hope you guys be able to understand it. क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करना है, आपको कौन सी ऑन टिप कौन चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए यार. जब ये चीज़ें आती हैं तो हम चीज़ें बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे. यस, दीज आर द नाम्स जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. फिर आते हैं हमारे पास प्लेस. वैदिक समस्कारा, तमस और तुगलक. रिपीट, मैंने आपको बोला वैदिक समस्कारा, तमस, तुगलक, आपको सारे ऑन टिप पहुंची. तीनों के तीनों, ज्यादा नहीं है, सिर्फ तीन है यार, जस्ट 3. समस्कारा, आई स्टार्ट विद समस्कारा, नाउ फॉलोड बाय तमस एंड तुगलक. समस्कारा इज अ स्टोरी अबाउट Hindu rituals, Hindu beliefs, and the obstacles that we have in a society. Yes, we guys have created our own restrictions with our mental thought process. Somehow we can say that Hinduism or Brahmanism was being attacked by the writer in this particular story. Intentionally or unintentionally, I don't have an idea, but seriously, when you read the text, you get that glimpse in your mind, okay, this is not been accepted. How should one deal with all this? But yes, the writer had done a great job while he was trying to write on something. And yes, you don't have any right to challenge the writer. कि राइटर को पूरी अथॉरिटी है वो अपनी स्टोरी को कैसे लिख रहा है, हाउ ही और शी गोइंग टू राइट ऑन द स्टोरी. तो समस्कार इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. आप बोलते हो सर यहाँ पे जब मैं समस्कारा की बात करता हूँ, मैं काफी सारी चीजें क्लियर करता हूँ. इंटरटेक्सुअलिटी की बात करता हूँ. यस, आई एम टॉकिंग इंटरटेक्सुअलिटी. तो इंटरटेक्सुअलिटी appears to be a special feature of the narrative texture of the novel Samaskara. Comment. I repeat the question. Intertextuality appears to be a special feature of the narrative texture of the novel Samaskara.
First one. Now Samaskara is allegory. Comment. Samaskara is allegory. This is really important. Yeah. We need to go through, we need to clear it. And then how does Samaskara depicts the caste division in Indian society? Caste division. I told you about this. Caste division. What's the importance of sexual encounter? Now this is, we cannot say that easy task to explain, but yes, we need to do. कहता है comment, I repeat, what is the importance of sexual encounter of Acharya? Who's this Acharya? He's the protagonist of the story. Yes, and Chandri. Sir, Acharya's sexual encounter with Chandri in the novel Samaskara. We guys need to clear this. Honestly, the entire novel based on this particular storyline of Chandri and Acharya. And Acharya is no more really the protagonist of the story. The entire story revolves around Acharya. तो सबसे पहले आपने किया समस्कारा, जिसको आपको ऑन टिप करना है. अगर ये आपके ऑन टिप है फिर किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. चलो यार आगे आते हैं. तुगलक. सब तमस तो सबसे पहले खेलते हो, उसको लास्ट में लेंगे आज. तुगलक, a mad king. Sorry, a king with a vision. An intellectual person. I don't take Tughlaq as a cruel person. The one whom the entire world hates. Sorry, I'm not the hate of Tughlaq. I'm one of the really admire Tughlaq works. He's the one who's having a vision in his mind. He was the one who was treated wrongly by the people, but really everybody their own viewpoints. यहाँ पे उसने उसको क्लियर किया तुगलक बता क्या रहा है. Can what sense the Tughlaq is a well structured play? Discuss. Question बनता है and you guys need to give the answer in a perfect way. I'm repeating the question. In what sense Tughlaq is a well structured play? Next, write a note on the contemporary relevance of Tughlaq. Contemporary relevance of Tughlaq. Here we have the next one. Examine Tughlaq as a political satire. Yes, है कहीं ना कहीं है, political satire है, वो आपको क्लियर करना है. Then we have Tughlaq is a play of existential struggle for survival. I repeat, Tughlaq is a play of the existential struggle for survival. Discuss. And the last, how do you think the stage direction of the play Tughlaq contribute to its impact? भाई ये तो इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे आप अजीज का कैरेक्टर चेक करते हो, क्रिटिकल अप्रिशिएशन देते हो, या आप नेहरूवियन पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हो तुगलक से. मैंने कहा कहीं ना कहीं राइटर अपना पॉइंट व्यू बताता है स्टोरी के थ्रू. पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाला क्वेश्चन बनता है, MEG5 वाला यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. तो तुगलक ऑफर द क्रिटिकल ऑफ नेहरूवियन पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म. डिस्कस. वो आपको डिफाइन किया गया. यस, यू नीड टू नो कि क्या है, कैसे करेंगे, क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए. दिस इज रियल रिक्वायर्ड. भाई ये तो बेसिक्स है. वी नीड टू नॉट नीड टू हैव टू completed. Jump to the next section, that is background. So background reading में क्या करना है? So short stories we have the short stories. I'm going to come on short stories, don't worry. Here we have the background. Ishmat Chugtai, the one of the best writer. Can the piece on Ismat be regarded as a social document regarding the values and conventions of contemporary society? Values, I repeat, the values and conventions of contemporary society. A piece on Ishmat works. ठीक है जी. Next one. Discuss the feature of art of pen sketch with special reference to Manto's on Ishmat. Manto's point of view on Ishmat. तो ये important है, हमें आना चाहिए. We must know guys. This is something very important. तो ये तो क्या इश्मत चुगताई के दो क्वेश्चन हो गए. बामा करुकुरा, सर इसको छोड़ सकते हैं. What are the aims of Dalit writing and how well does Karukura achieve them? Dalit writing aims क्या और Karukura ने कैसे achieve किया? On the basis of the reading of Bama Karukura, critically examine the distinctions of Dalit autobiography. Sir, distinctness तो है. Only Dalit can write Dalit literature. Comment कर सकते हो यहाँ. Can I bring out that distinct feature of Amrit Roy biography of Premchand? Or डिफाइन प्रेमचंद एज कलम का सिपाही. दोनों क्वेश्चन किए.
यार वो था ना क्या, वो था एक रियलिस्टिक राइटर। कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग में ना रियलिटी दिखती थी, यू कैन कनेक्ट विद इट। प्रेमचंद नॉट जस्ट नेम, ही इज अ लिटरेचर मास्टर, द रियल मास्टर ऑफ लिटरेचर. So yes, nobody can deny that he was so popular at that time when there was no media was working, no Insta, no Facebook, no YouTube, सीरीज कुछ नहीं था. फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी that we can feel his existence till today in literature. That's the work of प्रेमचंद. चलो यार, शॉर्ट स्टोरीज पे आते हैं. सब बेस्ट शॉर्ट स्टोरी अगर मैं बोलूँ, द कॉम्प्रोमाइज, आधों ने पढ़ी नहीं होगी सीरीज, आधों ने पढ़ी नहीं होगी. द कॉम्प्रोमाइज, मस्ट गो, सॉल्ट, बर्थडे, बर्थडे वन द बेस्ट वन, बर्ड्स, बर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी. द एम्प्टी चेस्ट, तड़पा, नाम भी नहीं सुना होगा. हेडमास्टर, प्रॉन चनाचूर, आधे कहते पागलों की स्टोरी है. सीरीज, दिस इज गुड फॉर नथिंग. एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, वेरी लोनली शी, पूरन मौसी. यस, द वेरी लोनली शी. एंड द लास्ट, टीनीज ग्रेनी. ये वो स्टोरीज हैं जो आपको ऑन टिप पहुंची. शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डट के लग जाओ. कोई दिक्कत आती है तो यू नो व्हाट टू डू. बाय गाइस.